Welcome everyone. Today we'll be discussing about the schools of psychology, right? But before that, we will understand how psychology as a discipline it emerged, who brought it, what was the initial like the developmental milestones of psychology as a science or psychology as a specific discipline, how it emerged, and then we'll also talk about Wilhelm Wundt, and then slowly we'll look about or about the structure, about the schools of psychology, right? So now let us see what is psychology. It is a bridge between philosophy and physiology, राइट साइकोलॉजी क्या है? एक ब्रिज बिटवीन, पहले क्या होता था, फिलोसॉफी एंड फिजियोलॉजी, बोथ ऑफ देम वर डिफरेंट, एंड देन इनके बीच का जो कनेक्शन आया, फिलोसॉफी और फिजियोलॉजी का जो कनेक्शन है, एक ब्रिज है जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को जो ज्वाइन करता है, दैट इज साइकोलॉजी, राइट? अब देखो फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी वही है विच इज़ कंसर्न विद आवर थॉट्स, ठीक है, आइडियाज़. हमारा फिलोसॉफी क्या है रिगार्डिंग दिस, मतलब हमारे आइडियाज़ एंड थॉट्स क्या है रिगार्डिंग दिस, राइट? अब फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी वो है हमारा फिजिकल मेकअप, हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, देन हमारा नर्वस सिस्टम, हाउ डज इट फंक्शन, दिस इज ऑल फिजियोलॉजी. दैट इज द फिजिकल मेकअप ऑफ द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम, इट मेक्स अ फिजियोलॉजी. नाउ व्हाट इज साइकोलॉजी? नाउ philosophy मैंने क्या बोला? Our thoughts and like our ideas regarding something. Now psychology studies how we have those thoughts. ये psychology से हमें ये पता चलता है जो philosophical हमारे जो thoughts है, views है, वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो कैसे form होते हैं हमारे ये thoughts, right? हमारा mind कैसे function करता है, this is what psychology talks about, right? And जैसे कि physiology talks about our brain and nervous system, साइकोलॉजी ये बताता है कि हमारे ब्रेन, माइंड, नर्वस सिस्टम, इनमें क्या फंक्शंस होते हैं, क्या मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, और कैसे वो मेंटल प्रोसेसेस वो हमारे फिलोसॉफी में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारे थॉट्स, स्पीच, एक्शंस, बिहेवियर, फीलिंग्स, उसमें कैसे कन्वर्ट होते हैं. तो बेसिकली साइकोलॉजी emerged as a bridge between philosophy and physiology, right? So the beginning is started, like it started, psychology as a specific discipline. It was started in 1879 जब विलियम वुंड ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब साइकोलॉजी का फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश किया इन लिप्जिग, जर्मनी, right? When did it happen? 1879. So 1879 is considered as the emergence of psychology as a specific discipline. 1883, what happened? Emil Kraepelin published the book, textbook of psychiatry. ये सारे questions आपके पूछे जाते हैं, right? So it is important to understand that Emil Kraepelin in which year? 1883 published which book? The textbook of psychiatry. Next in 1885, Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus जो है, he is related, he is famous for his experiments on nonsense syllables and regarding memory. ठीक है, उन्होंने वर्किंग मेमोरी के रिलेटेड जिन्होंने काम किया है, दैट इज हर्मन एबिंगस. व्हेन डिड ही पब्लिश हिज बुक? ही पब्लिश्ड हिज बुक इन 1885. एंड which book? The name of Hermann Ebbinghaus' book is Memory. And in his book, what did he mention? He mentioned about his experiments on nonsense syllables, right? Next, 1890, William James, he published the book Principles of Psychology. William James कौन है? He is considered as the father of American psychology, right? In 1890, he published the book Principles of Psychology. 1895, Alfred Binet, he opens the first lab of psychodiagnostics. When? 1895, first lab of psychodiagnostics by Alfred Binet. Which is the first school of psychology? Structuralism. Who is considered as the father of experimental psychology? Wilhelm Wundt. Father of modern psychology? Wilhelm Wundt. When did psychology become a separate discipline or field from philosophy and physiology? 1879, when the first lab of experimental psychology was set up in Leipzig, Germany. APA, American Psychiatric Association, when was it established? 1892. Who was the first president of APA? Stanley Hall, Chief Stanley Hall, first president of APA. Who is the first female president of APA? Mary Calkins.
right? Who is the first female president? Mary Calkins. Emil Kraepelin published which book? Textbook of Psychiatry. When? 1883. Hermann Ebbinghaus, 1885. Which book? Memory. What was mentioned? Experiments on nonsense syllables. Right? Now let us understand about Wilhelm Wundt. हमने मोनिज्म में क्या पढ़ा था? हमने मोनिज्म में पढ़ा था that in monism it is considered that reality consists of either the mind or the body, right? And monism is of two types, materialism or physicalism, and second one is idealism. So materialism में क्या है? Materialism में it is considered that the reality is made up of material things, or it is made up of matter, and the mental processes are considered similar to those of the brain processes, right? Wilhelm Wundt, he opposed materialistic monism, or Wilhelm Wundt opposed what? मटेरियलिज्म. ठीक है, स्टार्ट कैसे होगा? जब आप ये देखो, यू हैव टू लर्न इट इन अ सीक्वेंस और अंडरस्टैंड इट इन अ सीक्वेंस. हम स्टार्ट करेंगे डुअलिज्म में. डुअलिज्म किसका था? रेने डेकार्ट. डुअलिज्म के बाद क्या आया? मोनिज्म. मोनिज्म कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स, मटेरियलिज्म और फिजिकलिज्म, एंड योर आइडियलिज्म. मटेरियलिज्म में हम क्या बिलीव करते हैं? दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट और योर रियलिटी विच इज़ देयर अराउंड अस, इट इज़ अ फिजिकल मैटर, राइट? एंड मेंटल प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड equivalent to brain processes. Next, in idealism, what is suggested? It is suggested that the reality is made up of the mind, right? And idealism के कौन propose, मतलब who talked about idealism? George Berkeley. Next we come to Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt opposed what? He opposed materialism. So materialism में क्या होता है? Mind is equal to your brain. Mental processes is equal to brain processes. Consciousness, what is consciousness? It is completely neural activity. हम इसमें believe करते हैं that consciousness which we are talking about is just neural activity. And independent, there is no independent mental reality. The reality is only physical matter. The reality is only matter or material, right? There is no independent mental reality. कुछ भी नहीं है. Reality जो भी है, it is related to the body and matter, right? So this is what is materialism. So इन्होंने क्या बोला? Wilhelm Wundt, he opposed that, right? और उन्होंने क्या suggest किया? देखो ये क्या है? What materialism we have talked about now, or materialistic monism that we talked about now, it is crude or strict materialism. So Wilhelm Wundt opposed that. What is Wilhelm Wundt's proposition? He proposed voluntarism. Now what is voluntarism? Voluntarism मतलब देखो, voluntary behavior, it focuses on voluntary behavior. So when we are talking about voluntary behavior, it means our mind is active, is in an active state. It's not in a passive state. जब हमारा brain passive state में है, then involuntary actions are being carried out. But when our brain is in active state, then voluntary activities are being carried out. So in voluntarism, he suggested, or he proposed in his theory of voluntarism, that mind is active, mind is never passive. कॉन्शियसनेस जो होता है, मटेरियलिज्म में क्या था? दैट कॉन्शियसनेस इज ओनली न्यूरल एक्टिविटी इन द ब्रेन. बट ही टोल्ड दैट कॉन्शियसनेस वो होता है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द ब्रेन, right? He told that consciousness organizes all our experiences, all our sensations through a perception. Mental processes cannot be reduced merely to physiology. तो reductionism पे ये believe नहीं करते थे. ये नहीं बोल रहे थे कि mental processes equal to brain processes और mental processes is equal to physiology. ये क्या है? हम reductionism कर रहे हैं. Materialism में क्या हुआ है? The mental processes have been reduced to physiology or brain processes. They are considered equivalent to that. But he opposed everything. He told that first of all, mind is active, it is not passive. Mental processes is not equal to brain processes or physiology. So mental processes cannot be reduced merely to physiology. In materialism, it was talked that consciousness is neural activity, but he told that consciousness organizes experiences through a perception. Right? So in this way, he opposed direct materialism, strict materialism, crude materialism, or reductive materialism. He opposed all of this. And Wilhelm Wundt, what he proposed? He proposed voluntarism.
Next, second thing, what he proposed is psychological parallelism, right? So psychophysical parallelism. So इसमें क्या है, देखो उन्होंने क्या बोला, मेंटल प्रोसेसेस एंड फिजिकल इवेंट्स, ये फिजिकल जो प्रोसेसेस है, फिजियोलॉजी जो है, दे रन इन पैरेलल, राइट. साइकोफिजिकल पैरेललिज्म मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और द मेंटल प्रोसेसेस, एंड physiology or the physical processes, they run parallelly, right? पहले क्या था, they were considered equal, right? Mental processes is equal to brain processes or physical processes, but now it is considered कि वो same नहीं है, it is not the same, right? It is not reduced to that, rather both of them are separate and they run in parallel. One does not reduce the other. Materialism में क्या था, reductive materialism था. कैसे reductive materialism था, वहाँ पे mental processes were reduced to physical processes and they were then considered equivalent. But यहाँ पे एक दूसरे को reduce नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को affect नहीं कर रहे, they are just running in parallel. What are running in parallel? Psychological processes, physical processes, means mental processes, brain processes, or mental processes and physiological processes, they are running in parallel, right? Next, brain processes and conscious experiences correspond but are not identical. So he's saying that they correspond to each other, they run parallel to each other, but they are not equal, they are not identical to each other. So he again, in this way, by drawing this parallelism, he again opposed materialistic reductionism, right? Third thing, Wilhelm Wundt, he was the father of experimental psychology. So first time he introduced experimental method, right? उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब, वो इस्टेब्लिश किया इन लेप्जिग जर्मनी, राइट. ही डिड नॉट रिड्यूस साइकोलॉजी टू फिजियोलॉजी, ठीक है. पहले मटेरियलिज्म में क्या था, रिडक्शनिज्म था, क्या साइकोलॉजी को फिजियोलॉजी से रिड्यूस कर लेते थे, ठीक है, मतलब उसको बराबर मान लेते थे. बट इसमें क्या है, नो, ही टोल्ड दैट दे आर सेपरेट, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर वन कैन नॉट रिड्यूस द अदर, ठीक है. एंड देन इन दिस वे साइकोलॉजी, द बर्थ ऑफ साइकोलॉजी केम एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस, राइट. फिजियोलॉजी स्टडीज मीडिएट एक्सपीरियंस, राइट. सो दिस डिफरेंस ही ब्रॉट आउट. उन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है, इमीडिएट एक्सपीरियंस, राइट, एंड फिजियोलॉजी क्या स्टडी करता है, मीडिएट एक्सपीरियंस. नेक्स्ट, so summarizing all of this, what we can say that Wilhelm Wundt, he is the founder of modern experimental psychology, modern psychology plus experimental psychology. First psychology laboratory, which laboratory? Experimental psychology laboratory. When? 1879. Where? Leipzig, Germany. Separated what? Psychology from philosophy. Separated psychology from physiology also. 1879 is the birth of scientific psychology, right? So he considered psychology as a science, right? Which type of science is it? What does it study? It studies immediate conscious experience. What does psychology, according to Wilhelm Wundt, psychology क्या है, एक साइंस है जो क्या स्टडी करता है, immediate conscious experience. Which method did he approach? Experimental method. Experiments he conducted. Emphasized on what? When something is conducted in experimental mode, then the results can be measured. It can also be controlled. ये सब उसके साथ आता है. Experiment हुआ मतलब when something experiment is carried out, it means that can be measured, right? The outcome can be measured, it can be manipulated, it can be controlled. ये उन्होंने बोला. वॉलंटरिज्म में क्या था, माइंड इज नॉट पैसिव, माइंड इज एक्टिव. कॉन्शियसनेस इज नॉट जस्ट न्यूरल एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेज आर एक्सपीरियंस थ्रू विच ए परसेप्शन. वॉट इज ए परसेप्शन? ए परसेप्शन एक मेंटल प्रोसेस है, इट इज़ एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस. ए परसेप्शन कैसा मेंटल प्रोसेस है, जो हमारे सेंसेशंस को मीनिंगफुली एक कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल होल में, दैट इज ए परसेप्शन, राइट. सो दिस इज व्हाट इज ए परसेप्शन, ठीक है. हमारी जितनी भी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है, कॉन्शियस ही होगा. देखो, व्हेन समथिंग इज वॉलंटरी मीन्स इट इज कॉन्शियस ओनली, अनकॉन्शियस कैन नॉट बी वॉलंटरी. तो ये सारे सिनोनिमस वर्ड्स है अगर हम देखें तो, राइट. सो वॉलंटरी बिहेवियर
और या फिर हमारा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं कैसे, मीनिंगफुल होल में. हाउ? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ए परसेप्शन. व्हाट इज ए परसेप्शन? इट इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस. Next, he drew a parallelism between psychology and physiology, right? That is, mental and physical processes, they are not identical to each other, they do not reduce each other, they just run in parallel to each other. So in this way he rejected what? Crude reductionist materialism, right? Next, trained introspection. This is a very important thing, राइट. तो उन्होंने क्या बोला, ये जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ये हम कैसे स्टडी करेंगे? थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन, राइट. सिस्टमैटिक. ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन का दूसरा वर्ड इज इंट्रोस्पेक्शन, ट्रेन्ड इंट्रोस्पेक्शन. सो क्यों ट्रेन्ड इंट्रोस्पेक्शन है? बिकॉज एक्सपेरिमेंटल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद को, ठीक है. सो इट इज़ कंडक्टेड अंडर कंट्रोल लैब एक्सपेरिमेंट्स, लैब कंडीशन. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल इंट्रोस्पेक्शंस. सो यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट विल्हेम वुंट, he proposed trained introspection, that is the introspection or self observation which is carried out in experimental settings under controlled settings, right? So these are all the things that we need to know about Wilhelm Wundt. And then what Wilhelm Wundt was not, he was not a behaviorist, right? Because he focused on conscious experience. He focused on mental processes, how physical processes and mental processes are parallel to each other. तो विलियम वुंड का बिहेवियरिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये आप कर लो, ठीक है. बिकॉज एंड नेक्स्ट इज ही इज नॉट अ स्ट्रिक्ट मटेरियलिस्ट, right? He's not a reductive materialism, he opposed that rather, ठीक है. He's not a pure rationalist. अब rationalist क्या हम देख लेंगे, but understand he is not a behaviorist, he is not a materialist, he is not a strict rationalist, and he is not a simple associationist empiricist. अब empiricist क्या है वो हम देख लेंगे, but he is also not a simple association करके empiricism जो है वो भी नहीं थे, ठीक है. He was what? He was a transitional figure between philosophy and scientific psychology, right? So there are some certain points. William Wundt क्या points that we need to remember, or the key words that we need to remember is 1879 first lab, voluntarism, conscious experiences, right? A perception, where conscious experiences are organized into meaningful wholes. Immediate experience, immediate conscious experience पे it focused. Psychophysical parallelism, that mental processes and physical processes are not identical to each other, they do not reduce each other, rather they run parallel to each other, and he is the founder of experimental modern psychology. Was Wilhelm Wundt a rationalist? Not in the classical philosophical sense, right? So in the next class we'll see what is rationalism. How do we say that Wundt was not a simple rationalist, right? फिर विलियम वुंट का हम देखेंगे एम्पिरिसिज्म के साथ व्हाट इज़ द रिलेशन, ठीक है. पहले रैशनलिज्म के साथ देखेंगे, फिर हम देखेंगे विद एम्पिरिसिज्म व्हाट इज़ द रिलेशन, एंड देन विल डील इन डिटेल विद व्हाट इज़ रैशनलिज्म, right? What is the difference between rationalism and empiricism? All these things again we'll deal in detail. Thank you for watching today's class.